नमस्कार, देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ है मंजरी। मंजरी, बहुत सुंदर लग रहे हो और Thank you. ब्यूटीफुल हाउस, आई मस्ट से। हाउ आर यू? I'm very good. Thank you so much. ग्रेट। अब मुझे बताइए, कैसी प्रतिक्रियाएं मिलती हैं आपको फ्रीलांसर के लिए? मुझे बहुत प्यार मिल रहा है फ्रीलांसर के लिए। मतलब आई न्यू पीपल विल लाइक इट। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी मुझे पता था अच्छा लगेगा, बट इट्स ओवरवेलमिंग द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स फ्रीलांसर को मिला है। मतलब अभी कहीं भी जाती हूँ तो एवरीबडी इज लाइक, ओ सेकंड पार्ट कब आ रहा है, सेकंड पार्ट कब आ रहा है, दे ऑल वेटिंग फॉर इट एंड मोस्ट पीपल हैव वॉच्ड इट. So yeah, I mean, like, when audience love a project you've been a part of, it really it's so overwhelming. लवली। और सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट अभी तक क्या मिल रहा है आपको? Yeah, it was very interesting to watch some people on Instagram. There's some platforms which have actually removed mine and Mohit's scenes from it and made these little videos about, these two, the scenes of ours and all that. So I think that by itself was a huge compliment. Lovely. And how was working with Mohit? Because he has his own fond fan following for him. I mean, भगवान जी के तौर पे भी उनको पहचाना जाता है। It's like a god, godly है क्या वो? I think he's very naughty. अच्छा, Yeah, ओके। but he's like poker face naughty. He's not like on your face naughty. He's such a warm, lovely person to hang with, talk to. He's a very nice guy. So I really enjoyed working with, and I'm so happy he's doing so well. Like he's having back to back good, amazing projects. So yeah. ट्रू। और जब ये फ्रीलांसर आपके सामने आया था तो क्या कहा गया था, क्या डिटेल्स दिए गए थे और आपको लगा कि ये मोमेंट पे लगा कि नहीं, आई शुड टेक दिस? Yeah, I had all the reasons to say yes to the project. To begin with, it was Neeraj Pandey sir's project. Like he was creating it, and I've been dying to work with him since so long. And पूरी team उनकी इतनी अच्छी है, and I kind of realized it's a very impactful character, and बहुत अलग था from the kind of work I've done in the past. So it gave me an opportunity to understand a different kind of person better, like this character, and like to work on the whole aspect of who she is, why she is, like someone who's going through dissociative disorder, which is a very serious mental health issue, which I did not know about in the past. I wasn't aware of it in the past. So I got to learn a lot about it. So yeah, so I had a lot of reasons like which were very exciting for me to be a part of this. सजनी, जब आप ऐसा कोई रोल कर रहे हैं जिसमें आपको मेंटल हेल्थ की बात करनी पड़ती है, तो उसके लिए क्या कोई स्टडी की या नीरज जी ने कुछ बताया? So one of the studies I did was basically मेरी जो काउंसलर हैं, मेरी जो साइकोलॉजिकल काउंसलर हैं, उनसे मैंने पूछा to understand the depth of what exactly happens to a person when you go through something like this. So उसका मैंने technical detail उनसे लिया, and after that, of course, I kind of, as a human being, as a person who is, I mean, I do empathize with, people like with what they have been through. So I kind of put, um, I applied the knowledge of that into the character of what she might be going through and how she would react and why, So all that I did a bit of that. So yeah. ओके। तो आप इफ यू हैव अ साइकोलॉजिस्ट विद यू, आप जनरली क्या बातचीत होती है आपकी उनसे? क्योंकि आप जिस तरीके की लाइफ जीते हैं, हाँ. हैट्स ऑफ। पता नहीं कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ हाँ. एक बहुत सिंपल लेवल पे पूछती हूँ आपसे कि आपको जब कोई रोल निभाना रहता है तो यू गेट इनटू द स्किन ऑफ दैट कैरेक्टर, राइट? सो उससे उसके अंदर जाना, उसके बाहर हाँ. निकलना, तो ये हाँ. साइकोलॉजिस्ट कितनी हेल्प करते हैं आपकी, और क्या इसी चीज में हेल्प करते हैं आपकी? No, I'll be very honest. So there have been moments in my life which have been difficult too, and I think हमारे country में, unfortunately, it's looked down upon to go to a counselor because people think that, oh, पागल हो क्या, तुम counselor के पास क्यों जा रहे हो? No, unfortunately, people don't take mental health very lightly. But we're all human beings. We all go through ups and downs and really sometimes low moments in life. Um, and they are professionally, they have learned professionally to help you. So like I had
I mean, like, I mean, it's a difficult industry to be in, right? So, I mean, like, we're emotional human beings. Human beings are emotional beings. And while you're growing up, there are a lot of things you keep putting under the carpet a lot of times. And then, unfortunately, it comes out the wrong way at times. So I had a phobia for which actually I had first time gone to her. And I realized it was so liberating for me when I kind of went and I kind of the way she helped me out was very liberating, and I kind of got over that phobia and stuff like that. So I mean that's why I had gone to her. Apart from that, so now she's become a friend of mine. So whenever I'm playing a very intense, difficult role, which I'm kind of trying to understand at a deeper level psychologically, I always check with her. I always ask her to educate me more about that. So yeah. I think that's your homework in that case. Yeah, that's my homework. आपको जाने तो या जाने ना में भी आपका एक सीन है जहां पर आप अपने मम्मी पापा की लड़ाई को ऐसे प्रोजेक्ट करती हैं एज इफ Yeah, नथिंग हैज हैपेंड, राइट? दैट वाज आल्सो क्वाइट अ टची थिंग। yeah. शायद अब आप इतने इतने सारे रोल करने के बाद आपको समझ में आया होगा, क्या उस समय समझ में आया था कि दिस इज आल्सो काइंड ऑफ अ सिचुएशन, मेंटल सिचुएशन और इमोशनल Um, सिचुएशन? so it was an emotional situation for sure. It was a defense mechanism for sure. So ये सब चीजें समझ गई थी, but like uh, that time it was like people weren't so aware of mental health issues and everything. So but now people are more woke about it. People are much more woke about it today. But us time I just understood ki okay, this is a girl who knows. In fact, she even says it in her dialogue when I'm finally having that conversation at Marine Drive with Jay's character. When I tell him I know, but I don't want to see it. ऐसा नहीं कि वो नहीं जानती कि उसके पेरेंट्स ठीक नहीं है, ऐसा नहीं कि वो नहीं जानती कि इट्स अ वेरी वेरी अनहेल्थी टॉक्सिक रिलेशनशिप her parents share, but she is just she is just shutting down her mind to that and trying to, that is also kind of a dissociation. That is also kind of a dissociation. So there, which I didn't understand at that point of time. उस time मैं बहुत छोटी भी थी, and like so as I grew up, I realized it. So yeah, so but she knows what she's going through, and Certainly, since you're playing such kind of आपने बहुत तरीके से अपनी बात समझाई इस कैरेक्टर के बारे में, लेकिन एक बोलने वाले और एक सोच ये भी आती है कि आजकल मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा बड़ा भी बनाया जा रहा है, जबकि ये चीज वो होती है जहां आपके मम्मी पापा आपको समझा सकते हैं कि अरे बेटा ऐसे क्यों सोच रही है, ऐसा थोड़ी होता है। या फिर कभी कभी बचपन में मुझे तो बड़ी मार पड़ी हुई है, अरे ये क्या फालतू चीज सोच रही है, पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे, क्यों इतना सबका सोच रही है। नहीं, ये वो बहुत बहुत अलग आयरनी। होता है. हम्म। That these two are very different things. Mental health issues are very different from normally. And ऐसा नहीं होता है कि like sometimes people are like not, if somebody is experiencing some emotion and to tell them ऐसा कुछ भी नहीं है, हम्म। that is not right. You have to honor what you're feeling at that point of time. And I think today, I think I've seen the way a few of my friends have been uh, handling their children. I think parents are much more aware of the whole situation of mental health, and with this whole with technological development, and there's so much pressure on people. Like I'm not able to explain it very well right now, but it is very important. Like जब बुखार होता है, people just go to a doctor. अग्री But अग्री like अग्री। every disease of the body, it it actually generates from a psychological reason. So it is very important to have a healthy mind along with a healthy body. वाह। So yeah, I mean, and it's very liberating when you kind of go speak to somebody who's professionally trained to understand you deeply. हाँ It हाँ। and makes you realize what you are going through. It's very liberating. यस, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। It मुझे frees your एक, spirit. आई एम श्योर, एक एक बात बताओ, यूर मराठी गर्ल, यू वर्क फॉर हिंदी इंडस्ट्री, तमिल, तेलुगु, और जहां जहां मौका मिलता है वहां हमें मंजरी देखने को मिल जाती है, इतनी सारी लैंग्वेज को मैनेज कैसे कर रहे हो? I love languages, and I have always enjoyed learning new languages. In fact, I'm also a French student. But मैं कैसे manage करूँ? But I think an actor should never have this whole barrier of a language, right? So हाँ तो मुझे तो बड़ा मजा आता है. मराठी तो मेरी mother tongue है, so it comes easily to me. हाँ। I remember Telugu में भी मुझे बड़ा मजा आता था. I would learn the meaning and the pronunciation of every single word.
एंड एक वीक पहले मैं अपने डायलॉग्स लेके उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करके मैं कभी रट नहीं सकती. आई हैव नेवर लर्न द आर्ट ऑफ रट्टा मारोफाइंग इन स्कूल. आई हैव नेवर अंडरस्टूड हाउ पीपल डू दैट एंड हाउ कैन anyone do that. I need to understand every word, every meaning, everything of what I'm studying. So वो सब करके एक वीक तक मतलब मैं दिमाग खा जाती थी असिस्टेंट डायरेक्टर का कि मुझे समझाओ देखो ये कैसे बोलते हैं वो कैसे बोलते हैं. बट देन by the time I was on set, I knew exactly what I was saying without um, 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 I mean, I would not think of कि मेरी अगली line क्या है. I would think of only performance at that point of time. So So एक एक पार्ट बहुत स्ट्रांग हो जाता तो इट बिकम्स इजियर फॉर एन एक्टर टू जस्ट परफॉर्म इन दैट केस. yeah. लवली. एक एक चीज जस्ट मैं अपने हिसाब से पूछ रही हूँ, ऐसा है क्या कि आजकल हम लोगों की इंग्लिश इतनी ज्यादा होती जा रही है कि हिंदी का जो एक्चुअल टच है, लाइक द वे यू आर महाराष्ट्रन, आप मराठियों का बोला जाता है कि जब हिंदी बोलते हैं तो बहुत सुंदर लगती है अगर वो एक टोनल निकाल दिया जाए फॉर सम टाइम. सो बहुत स्पष्ट बोलते हैं, बहुत साफ हाँ. बोलते हैं. तो क्या हाँ. कहीं हम हिंदी को थोड़ा सा खोते जा रहे हैं? व्हाट इज योर टेक? बिकॉज बहुत ज्यादा इंग्लिश यूज होती है, इवन इन हाँ. सॉन्ग्स, इवन इन डायलॉग्स, even while writing dialogue. I mean, I still remember Bachchan हम्म. साहब once told me in an interview that हिंदी मैं समझता हूँ तो बोलने में आसान होता है और एक्टिंग करना और आसान हो जाता है. Do you agree or what is your take? यार it is a fact and it's a very unfortunate fact right now कि लोग किसी की इंटेलिजेंस को जज करते हैं. तुम इंग्लिश कितनी अच्छी बोलते हो. बहुत सारे लोग हमारी बहुत. हमारी इंडियन लोग ही जो लोग इंग्लिश में बात करते हैं उनकी सडनली उनकी उनकी वट अलग ही हो जाती है. इनफैक्ट एंड दैट्स अ वेरी सैड थिंग. ओके, It is. मैंने इसी टॉपिक के ऊपर मेरी एक शॉर्ट फिल्म आई थी खामखा. एक 15 मिनट की शॉर्ट फिल्म है जो विच काइंड ऑफ went viral. People loved it. They related to it. And in fact, जब मैंने भी स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो I immediately related to that character and the conversation that's happening. वो बड़े प्यार से एक रोम कॉम स्पेस में एक बड़ी लाइट हार्टेड सी एक शॉर्ट फिल्म बनाई है मेरी डायरेक्टर ने, आरती ने. And so that एकदम it really touch a chord with everybody in the country because as I said कि ये है एक issue है unfortunately because हिंदी unfortunately हमारी खुद की country में people kind of don't really value it so much. And in fact I still remember जब मैं छोटी थी, so my mother very strongly wanted me to learn good English. And my mother manages very well in English, but she was not very comfortable in English. वो भोपाल में पली बड़ी है, उनकी हिंदी बहुत अच्छी थी, मेरे पापा की हिंदी बहुत अच्छी थी, दोनों मध्य प्रदेश के हैं तो मराठी से ज्यादा वो हिंदी में बात करते थे. तो आई ग्रू अप लिसनिंग टू हिंदी इन द हाउस एंड नॉट मच ऑफ इंग्लिश. तो मेरी हिंदी बहुत अच्छी हो गई थी, इंग्लिश में मुझे प्रॉब्लम होती थी. एंड सो माई मम मेड श्योर दैट वो मुझे लाइक कंपल्सरी इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल में डाले ताकि मेरी इंग्लिश अच्छी हो, ताकि मैं वो एक्सपीरियंस ना करूं जो वो एक्सपीरियंस करती ना. माई मदर यूज टू हैव a little bit of inferiority complex because she could not speak good English. In spite of being so talented, in spite of having everything, and like she had it all, but she went through that. And in fact, even मैं भी while growing up, जब मैं छोटी थी, हमारे स्कूल में ग्रुप्स बन जाते हैं ना. तो एक वो ग्रुप होता है जो एकदम लाइक हमारे स्कूल में एक बहुत ऐसे फटाफट हिंदी इंग्लिश बोलने वाला ग्रुप था, who used to look down upon children who used to speak in Hindi. So unfortunately ऐसा होता था, and because of which I had started feeling not good about myself, and I was very conscious of speaking English because मेरी इतनी क्लियर नहीं थी उस टाइम बचपन में. And because of which I went through this whole thing of I used to have a list while growing up. It was a speech defect which came psychologically, which जैसे ही मेरी English ठीक हो गई, वो भी चला गया. It went away, and because the confidence came back again. So it is a very unfortunate fact, but it does happen. Unfortunately, people need to respect the language of our country. Hindi is something we need to be proud of. Like आप फ्रांस में जाएंगे, वहाँ पे people are so proud of French. Germans are so proud of German. Like Spanish people are so proud of their own language. We need to be proud of our languages. So yeah, and it's important that we speak it clearly and not Yes, feel definitely. like any less about talking in it.
आई थिंक ये सिर्फ एक भाषा है जिसमें आप कंफर्टेबल होते हैं या कंफर्टेबल नहीं होते, दो चीजें होती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हाँ, होता है। एग्जैक्टली। सो अब नेक्स्ट क्या, और क्या क्या करने वाले हो आप, और क्या सपने देख कर रखे हैं? अभी तो नया साल भी आने को ही है कुछ। जी। मैं टिपिकल सवाल नहीं पूछूंगी कि क्या आपके गोल है, नो नो, आई इट्स वेरी फनी। बिल्कुल नहीं होते वो तो। हाँ, वो तो यू टेक रेजोल्यूशन एंड यू ब्रेक इट द नेक्स्ट डे इटसेल्फ। बिल्कुल बिल्कुल। बट स्टिल एक होता है ना, आप अपनी प्लान तो कर ही सकते हैं, आप सपने तो देख ही सकते हैं। साल अपने हिसाब से हो जाएंगे, सपने तो वैसे ही रहते हैं ना। So अभी तो I just want to keep doing great work, and I have some really good releases coming in the coming year. तो मैं उनकी वेट करूंगी अभी। फ्री एक तो सॉरी, फ्रीलांसर तो आ रहा है अभी दिसंबर में। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, पुणे हाईवे एक प्रोजेक्ट है, पेंट हाउस इज अनदर प्रोजेक्ट, एंड चलती रहे जिंदगी इज अ वेरी beautiful independent film which we made, which is getting a lot of love at international film festivals and stuff. So abhi hum log we won the DC South Asian Film Festival क्या बात special jury mention in that. है, अरे वाह। So I'm looking forward to the release of that, and it's getting a lot of love from all the festival circuits. So लवली लवली, अरे ऐसी खुशियां भरी रहे आपके साथ जीवन भर में। thank मैं तो you. यही चाहूंगी।